और मनमोहन सिंह जी के बारे में कहा जाता था कि जब वो बोलते हैं तो पूरा विश्व सुनता है। हमारे साथ पी चिदम्बरम साहब हैं। जब चिदम्बरम साहब बोलते थे तो मनमोहन सिंह जी भी सुनते थे और हम सब तो सुनते ही थे, पूरा देश, पूरा विश्व सुनता था। आज के बजट पर पहले श्री पी चिदम्बरम अपना वक्तव्य अंग्रेजी में रखेंगे और उसे फिर हिंदी में प्रोफेसर गौरव वल्लभ आपके सामने रखेंगे। ज्यादा समय नहीं लेते हुए श्री पी चिदम्बरम। Good evening to all of you. As usual, I have a brief opening statement. It will take about 5 to 7 minutes to read it. And after that, Dr. Gaurav Vallabh will give the gist of it in Hindi, and then we'll take questions. The budget for 2023-24 and the budget speech of the Honorable Finance Minister show how far this government is removed from the people and their concerns about life, livelihood, and the growing inequality between the rich and the poor. Let me begin by pointing out with regret that the FM has not mentioned the words unemployment, poverty, inequality, or equity anywhere in her speech. Mercifully, she has mentioned the word poor twice in her speech. I'm sure the people of India will take note of who are in the concerns of the government and who are not. Let me turn to the numbers. Last year, the government estimated the GDP for 2021-22 at rupees 232,14,703 crore, and assuming a nominal growth rate of 11.1%, projected the GDP for 22-23 at rupees 258 lakh crore. The GDP for 21-22 has since been revised upward to rupees 236 lakh 64,637 crore. In today's budget papers, the GDP for 22-23 has been estimated at rupees 273 7,751 crore, which yields a growth rate of 15.4%, much above the earlier estimate. Given these impressive numbers, real GDP ought to have grown in double digits. Yet the FM and the Economic Survey put the GDP growth at only 7% this year. Will the government explain? The claim of real GDP growth is in the face of lower capital expenditure. Please see the following numbers. In the current year, the BE and RE numbers, capital expenditure was budgeted at 7,50,246 crore. Revised estimate is lower at 7,28,274 crore. Grants for creation of capital assets was estimated at 3,17,643 crore. Revised is 3,25,588 crore. The effective capital expenditure was estimated at 10,67,889 crore, but revised downwards to 10,53,862 crore. Please note that both capital expenditure of the central government and the effective capital expenditure are lower than the budget estimates. So what drove growth in 22-23? We know that private investment is down, exports are down, and private consumption is stagnant. So how does the government explain the 7% growth in the current year? Besides, in 22-23, the growth rates in Q1 and Q2 have been estimated at 13.5% and 6.3% respectively.
So we already have 9.9% growth in the first half of the year. If the whole year will only yield 7%, does that mean that Q3 and Q4 will record growth rates of only 4 to 4.5%? For the whole year, therefore, quarterly GDP growth rate is sliding. 13.5, down to 6.3, down to 4.2, and then eventually down to 4.0. There are other numbers which are disconcerting. The lesson to be drawn is that the government is not spending what was promised on key schemes. Now, I've given the numbers in the BE and the RE. Just look at the numbers. Agriculture and allied activities, 83,521 crore, down to 76,279 crore. PM Kisan, 68,000 crore to 60,000 crore. Education, 104,278 crore to 99,881 crore. Health, 86,606 crore to 76,351 crore. Social welfare, 51,780 crore to 46,502 crore. Urban development, 76,549 crore to 74,546 crore. This is shocking. Umbrella scheme for development of scheduled caste, 8,710 crore to 7,722 crore. Scheduled tribes, 4,111 crore to 3,874 crore. Minorities, 1,810 crore to only 530 crore. And other vulnerable groups, 1,931 crore to 1,921 crore. Now look at transfer to state. What was promised was 3,34,339 crore. But what will be transferred is only 2,70,936 crore. Where have the remaining 64,000 crore gone? No taxes have been reduced, except for the small number who have opted for the new tax regime. No indirect taxes have been reduced. There is no cut in the cruel and irrational GST rates. There is no reduction in the prices of petrol, diesel, cement, fertilizers, etc. There is no cut in the numerous surcharges and cesses which are anyway not shared with the state governments. Who has benefited by this budget? Certainly not the poor, not the youth looking desperately for jobs, not those who have been laid off, not the bulk of the taxpayers, not the homemaker, not the thinking Indians who are shocked by the growing inequality, the rise of the number of billionaires, and the wealth being accumulated in the hands of the 1% of the population. And certainly not you. You have not benefited by this budget. This much is clear. The government is determined to push the fortunes of gift city Ahmedabad at the cost of other commercial and financial centers. The government is also determined to push the new tax regime, for which there are few takers for a variety of reasons. Besides, making the new tax regime the default option is grossly unfair and will rob the ordinary taxpayer of the meager social security that he may get under the old tax regime. The Economic Survey listed all the headwinds that the world and India will face, but did not offer any solutions to face these headwinds. The budget speech did not even acknowledge the headwinds. The government is living in its own imaginary world. Three stark facts are acknowledged the world over. One, world growth and world trade will slow down significantly in 2023. For India, it will be 2023-24. Two,
many advanced economies will go into a recession. 3, the global security situation, thanks to the Ukraine war and other brewing conflicts, will deteriorate. If all three materialized, what will the government do? What kind of burdens will that place on the people who are suffering owing to inflation and unemployment? There were no answers provided either in the economic survey or in the budget speech. This is a callous budget that has betrayed the hopes of the vast majority of the people. नमस्कार साथियों, 2023-24 का जो आम बजट वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया, वो ऐसा बजट था जो भारत की आर्थिक समस्याएं जो हैं उसमें इस बजट में उन समस्याओं का कोई निवारण या उन समस्याओं को इंगित तक नहीं किया गया। आप सब लोगों को जान के ताज्जुब होगा कि पूरे बजट में बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक असमानता शब्द का प्रयोग तक नहीं किया गया। पुअर, गरीब का शब्द का प्रयोग भी मात्र 2 दफा पूरे बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने किया। इससे ये समझ में आ जाता है कि ये आम बजट किसके लिए बनाया गया था और इसका फोकस कौन था। सबसे पहले हम कुछ नंबर्स की बात करेंगे। 2021-22 में देश की जीडीपी 232,14,703 करोड़ वित्त मंत्री जी ने बताई थी और ये भी बताया कि नॉमिनल ग्रोथ 11.1% रहने की उम्मीद है। उसके अनुसार 22-23 की जीडीपी 258 लाख करोड़ रुपया होनी चाहिए थी, पर 2021-22 की जीडीपी को फिर रिवाइज किया गया। जो पहले 232.14 लाख करोड़ बताई गई, उसको 236.64 लाख करोड़ रुपया उसको रिवाइज किया गया। आज के बजट भाषण में जो मौजूदा वित्तीय वर्ष है 2022-23, इसकी जीडीपी 273 लाख करोड़ बताई। अर्थात अगर हम इसका विश्लेषण करें तो नॉमिनल जीडीपी में ग्रोथ होता है 15.4%। नॉमिनल जीडीपी में अगर 15.4% की ग्रोथ है तो रियल जीडीपी कम से कम डबल डिजिट में होनी चाहिए। वित्त मंत्री जी और आर्थिक सर्वेक्षण में इसको 7% पर बताया गया। क्या सरकार बताएगी कि ये 7% ही क्यों है? क्योंकि जो आपके बजट के जो नॉमिनल जीडीपी के नंबर्स हैं वो तो कुछ और ही व्याख्या कर रहे हैं। दूसरी बात, जो सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो जो एस्टिमेट किया था मौजूदा वित्तीय वर्ष में 10,67,889 करोड़, 10.678889 करोड़, जबकि रिवाइज्ड एस्टिमेट में वो 10,53,862 करोड़ हुआ। मतलब जो पूंजीगत खर्चा सरकार करना चाहती थी वो भी पूरा नहीं कर पाई। अब सवाल ये उठता है कि जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गिर रहा है, एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं, प्राइवेट कंजम्पशन मोर और लेस स्थिर बना हुआ है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत खर्चा है, वो गिर रहा है, तो ये 7% जीडीपी अचीव हुई तो हुई कैसे? इसका कोई व्याख्या इस बजट में नहीं दी गई। उसके अलावा जो मौजूदा वित्तीय वर्ष के 2 पहले क्वार्टर के जो रिजल्ट आए, 13.5% की ग्रोथ और 6.3% की ग्रोथ, तो पहले हाफ ईयर में देश की जीडीपी ग्रोथ हुई 9.9%। अगर हम मान भी लें कि 7% की जीडीपी ग्रोथ होगी तो आने वाले जो Q3 और Q4 है उसकी ग्रोथ 4 से 4.5% रहेगी। अर्थात मौजूदा वित्तीय वर्ष में क्वार्टर दर क्वार्टर देश की जीडीपी ग्रोथ रेट गिरी है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले क्वार्टर में 13.5%, दूसरे क्वार्टर में 6.3%, तीसरे क्वार्टर में 4 से 4.5% के बीच और चौथे में भी यही। तो देश क्वार्टर दर क्वार्टर मौजूदा वित्तीय वर्ष में जीडीपी ग्रोथ गिरी है। यह भी बड़ी ताज्जुब की बात है कि देश की सरकार देश की प्रमुख स्कीम्स में जितना खर्चा करने का सोचती है उतना खर्च भी नहीं कर पाती है।
कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूं। कृषि पर सोचा था सरकार ने कि 83,521 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जबकि इसको रिवाइज कर दिया गया 76,279 करोड़। पीएम किसान पर 68,000 करोड़ रुपया खर्च करने का बजटरी एस्टीमेट था, जबकि वास्तविक खर्च हुआ 60,000 करोड़। एजुकेशन पर शिक्षा 1,04,278 करोड़ रुपए खर्च करने का बजटरी एस्टीमेट था, खर्च किया मात्र 99,881 करोड़। हेल्थ पर 86,606 करोड़ की जगह 76,351 करोड़। सामाजिक वेलफेयर पे 51,780 की जगह 46,502 करोड़। शहरी विकास पर 76,549 करोड़ की जगह 74,546 करोड़। डेवलपमेंट फॉर द एससी कम्युनिटी पे 8,710 करोड़ खर्च करने का सोचा था और खर्च किया मात्र 7,722 करोड़। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के विकास पर सोचा था 4,111 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार, खर्च किया मात्र 3,874। माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट पे बजटरी एलोकेशन किया गया था 1,810 और खर्च किया मात्र 530 करोड़ रुपया। और जो वल्नरेबल ग्रुप्स है उन सोचा 1,931 करोड़ रुपया खर्च करने का बजटरी एस्टीमेट था, इसको रिवाइज करके कर दिया 1,821 करोड़। और आप सब लोगों को जान के ताज्जुब होगा कि राज्यों को जो केंद्र सरकार की ओर से जो डिवोल्यूशन के जो पैसा मिलता है उसमें 3,34,339 करोड़ रुपया देने का उनको ट्रांसफर का बजटरी एस्टीमेट था और दिया मात्र 2,70,936 करोड़। अर्थात ये 64,000 करोड़ रुपया राज्यों का जो हक था उनको नहीं मिला। अब करों की बात करते हैं। कोई मेजर करों में कटौती नहीं की गई, सिवाय जो न्यू टैक्स रिजीम में जो लोग ऑप्ट करते हैं उनमें छोटा सा मार्जिनल फेरबदल किया गया। जो इनडायरेक्ट टैक्सेज है उसमें कोई कटौती नहीं की गई। जो पेट्रोल है, डीजल है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर्स है, इनके दाम यथावत बने हुए हैं। जो जीएसटी की इरेशनल दरें हैं उसमें कोई रैशनलिटी नहीं लाई गई। और तो और जो केंद्र सरकार बहुत सारे सेसेस इकट्ठे करती है, और ध्यान रहे सेस का पैसा राज्यों को नहीं मिलता है, वो सीधा केंद्र सरकार के पास जाता है। उन सेसेस में भी सरचार्जेस में भी किसी तरह की कोई कटौती नहीं की गई। तो सवाल ये उठता है कि ये बजट से किसका फायदा हुआ। एक बात तो सत्य है कि इससे गरीब लोगों का कोई फायदा नहीं हुआ। जो युवा पीढ़ी है जो रोजगार की तलाश कर रही है उनका भी कोई फायदा नहीं हुआ। जो लोगों को नौकरी से निकाला गया है पिछले 2 साल 1 साल में उनको भी कुछ नहीं मिला। जो टैक्स पेयर्स है जो कि समय पर कर देते हैं उनको भी कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिला। जो माताएं बहनें गृहिणियां हैं उनको भी किसी तरह का फायदा नहीं हुआ। और तो और वह हर एक व्यक्ति जो भारत के बारे में सोचता है उनको भी आज के बजट से सिर्फ और सिर्फ निराशा और हताशा हाथ में लगी। यह बजट मुख्य रूप से उन लोगों के लिए इंगित किया गया था जिनके पास देश की अधिकांश वेल्थ है। और जो रिपोर्ट आई है ऑक्सफैम की रिपोर्ट या और जो इनइक्वालिटी रिपोर्ट है, आपको पता होगा कि 1% भारतीयों के पास देश की कितनी कुल संपत्ति है। हां, एक चीज बड़ी स्पष्टता से इस बजट में बाहर निकल के आई कि यह बजट अहमदाबाद की गिफ्ट सिटी को जरूर फोकस करना चाहता है और उसको एक मेजर बिजनेस हब के रूप में डेवलप करना चाहता है, फाइनेंशियल सेंटर के रूप में डेवलप करना चाहता है, वाणिज्यिक सेंटर के रूप में डेवलप करना चाहता है। हां, जो नए टैक्स रिजीम में जो करदाता कर देते हैं उनको कुछ फायदा मिला, पर यह करके सरकार यह कहना चाह रही है कि जो लोग पुराने कर टैक्स रिजीम में के तहत टैक्स दे रहे हैं क्योंकि वो वहां पे उनको एग्जम्पशन का फायदा मिलता है, तो सरकार इनडायरेक्टली ये कहना चाहती है कि आप एग्जम्पशंस में इन्वेस्टमेंट मत करो, अपने आने वाले समय के लिए पैसा मत लगाओ। आर्थिक सर्वे ने साथियों
बहुत सी देश के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया था। हमें उम्मीद थी कि वित्त मंत्री उन चुनौतियों का किस तरह सामना करेंगे, उसके बारे में विस्तार से अपने बजट भाषण में उल्लेख करेंगे। मैं 3 मुद्दे आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला, जो 2023 का वर्ष है, इसमें दुनिया की ग्रोथ और दुनिया की ट्रेड स्लो डाउन होगी। उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वित्त मंत्री जी इसके बारे में बिल्कुल खामोश थी। दूसरा, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं रिसेशन में जाएगी, उसके कारण देश की अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में इस बजट में किसी भी तरह का उल्लेख नहीं किया गया। और लास्ट, जो वैश्विक सिक्योरिटी सिचुएशन है, उसके बाद जो और आगे आने वाले समय में और ज्यादा डेट्रियोट करेगी, उसके बारे में भी इस बजट में किसी तरह का उल्लेख नहीं है। हमारा सवाल है कि जो चुनौतियां देश के सामने हैं, अगर ये सही साबित हो जाती है तो इन चुनौतियों से निपटने की सरकार की क्या तैयारी है, सरकार इनका किस तरह सामना करेगी? क्या फिर से इन चुनौतियों के पीछे छुप के हमारे को कहेगी कि भाई बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि ये वैश्विक चुनौतियां हमारे सामने, और जो देश के लोग भारी बेरोजगारी और भयंकर महंगाई से त्रस्त है, उससे निदान दिलाने के लिए सरकार की क्या रणनीति है, क्या नीति है, वो भी हम सवाल करना चाहते हैं। ये सारे सवाल ना तो कल जो आर्थिक सर्वे प्रस्तुत हुआ उसमें इन सवालों का उत्तर दिया गया, ना वित्त मंत्री के आज के बजट भाषण में इनका उत्तर दिया गया। तो हम यही कहेंगे कि देश के अधिकांश लोगों के लिए ये बजट उनकी आकांक्षाओं, इच्छाओं और उनकी उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा है। Government says it caters to the aspirations of middle class and especially exemption of 7 lakh rupees in new tax regime. What proportion of taxpayers have moved to the new tax regime? The Income Tax Department is expected to release basic data every year. The last data that has been released is only for assessment year 2019-20. Why has the data not been released? How many people have switched over to the new tax regime? How many of you have switched over to the new tax regime? What about those who have not switched over to the new tax regime? Has there been 1 rupee benefit for them? So are you saying that's not a relief at all for the middle class as being claimed by the government? First, the government must tell us how many of the middle class taxpayers have switched over to the new tax regime. The minor relief that has been given is only for those who have switched over to the new tax regime. For those who are in the old tax regime, there is no concession at all. Considering that the world is staring at a recession and there has been a continuous fall in the GDP growth quarter by quarter in our country, do you think the targets set by the government of 6 to 6.8% are achievable? Targets are meaningless for this government. Look at the opening few paragraphs. They say nominal growth this year has been 15.4%. But they say real growth will be 7%. Now, this is beyond my capacity to understand. How can nominal growth be 15.4 and at real growth be only 7%? I mean, somebody must explain. I'll admit that we are not very well informed, but those who are well informed should explain to us. So you expect a further fall in this? The GDP growth is falling. It was 13.5% in the first quarter, 6.3% in the second quarter, and according to their own number, the whole year will be 7%. Arithmetically, it works out only to another 8.2% in 2 quarters. So I've divided it into 4.2 and 4. You can divide it into 4.1 and 4.1. सर रेलवे को 2.4 लाख करोड़ का इस बार बजट दिया गया है, लेकिन 9
allocation to railway. There's been increase. रेलवे भी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है. Don't you think it's a good thing and you should appreciate this? See, allocating more money for capital expenditure is good. Allocating more money for capital expenditure in railway is good. But look at the record of this government. It allocates money for capital expenditure, but spends 22,000 crore less. Will they be able to spend the additional allocation? That is the question. And how many jobs in the railways are vacant? How many exams of railways have been cancelled? So, allocating money is not equal to spending the money. Nor is allocating money equal to creating jobs. It's only when you actually spend the money and fill the vacancies, your objective will be achieved. Sir, just a follow-up of the first question that we asked. Do you think that by incentivizing the new tax regime, the government actually wants to move towards one system of and do away with the old tax regime? You are absolutely correct. That is their intention. But there is a simpler way of doing that. Just say, after 3 years or 4 years, all exemptions will come to an end. Why are you taking this circuitous route? Simply say all exemptions will come to an end, say by 2027 or 2028, and there becomes one tax regime then. Why do you have a exemption tax regime, a no exemption tax regime, and then say it's a default option? What is all this complicated exercise? The ultimate aim of the government is that tax exemptions should be abolished. Tax exemptions give some social security to the middle class today. If tax exemptions are abolished, then there must be another mechanism by which the taxpayer gets some social security. सर, कांग्रेस के सांसद कार्तिक चिदम्बरम जो आपके बेटे भी हैं, उन्होंने तारीफ की है और उनके स्टेटमेंट की काफी चर्चा हो रही है आज, जो टैक्स में कटौती हुई है, उसकी उन्होंने तारीफ की है. तो उस पर आप क्या कहते हैं? What's he saying? Karthik has said good things about this budget. Appreciated the budget. The tax exemption. He's welcomed the government's move of exempting 7 lakh rupees. That is his view. I don't know if he has moved to the new tax regime. I don't know. That is his view. Sir, how is the situation of the unemployment and the income inequality in the country after seeing the budget and the overall state of the economy? Because Dr. Farooq Abdullah and other opposition leaders have said that technically there is no middle class, people have been pushed towards the poor class or towards, many of them towards poverty. See, 5.6 crore people have fallen below the poverty line in the last 3 years, thanks to the pandemic and other reasons. Now, to assume that the poor will remain poor and 1% of this country will accumulate the wealth, that's an assumption which we reject as a cruel, cynical assumption. You have to reduce inequality. You have to ensure that the middle class grows. You have to ensure that more people below the poverty line go above the poverty line. Please read the Azim Premji University report. Crores of people have been pushed below the poverty line. And whatever middle class there is, you are denying any relief to that middle class unless that middle class taxpayer moves to the new tax regime. And that is a paltry relief. If you do the calculations, and that will burden this statement, you do the calculation, there is really no benefit except in the middle two slabs. There is really no benefit even under the new tax regime. Now, I can't read the mind of the government.
or the Prime Minister or the Finance Minister. It's quite clear that they have forgotten the poor. They have practically forgotten the middle class. So, you can only conclude that they are relying upon other factors and other forces to win an election. Well, I don't know. This question should be put to the Prime Minister. Of course, I understand you will never give it an opportunity. But you put the question to the Finance Minister at least. This is about the Manrega actually. So various states are complaining about the wages are not given to the daily workers. But would you like to comment on this because there is no mention about Manrega actually? You see, what is promised is 100 days of employment a year. Now, the economic survey says the Manrega demand has increased. Over 6 crore households have asked for work. Only 5.7 crore households got work. And the average number of days they got work is 42. So we don't have a full Manrega. We have got a less than a half Manrega. They don't get work. All the households don't get work. And even the work they get is only 42 days a year. And every state is saying arrears of Manrega wages are due. So actually, Manrega is being squeezed from all sides. Don't give work to everybody who demands. Don't give him or her 100 days work and hold back the wages. So it's being squeezed from all sides. Sir, you scrutinize the whole budget from every point, and opposition leaders are saying that it is an election budget because some packages are being announced for particular states. Do you think that this will heal the BJP in votes? Well, I don't know what state got what. You have to, yeah, but you have to look into it. But the fact is that in 22-23, they promised to transfer 3,34,339 crore. They will transfer only 2,70,936 crore. What is the use of announcing packages if money is not transferred? They have transferred, or they will transfer by 31st of March this year, 70,000 crore less than what was promised. Now, this is the budget number. They can't transfer any more because once this budget is approved, they cannot transfer anything more than 2,70,936 crore. So the state should be asking, where is the money that you promised us? You promised to transfer 3,34,000 crore. You are transferring only 2,70,000 crore. That is the question which chief ministers must ask. And I hope they will. No, that is not part of the budget speech or the budget press conference. That you should ask separately. Anyway, the party has already made a statement. Did you put the question to the finance minister a couple of hours ago? Any other question? Thank you. Okay, thank you. Thanks.